Hello 5th class student, how are you all? I hope all of you guys are fine. So children, today we are going to start a new lesson, that is lesson number 8, microbes and communicable diseases, from term 2 subject science. So all of you take out page number 97. So this lesson is all about the different types of microbes, microorganisms, bacteria which causes different types of diseases, and few diseases are there, like few bacteria are there which transfers from one person to another person. And what are those? Let us see. So microbes and small microorganisms. Microbes and microorganisms both are one name. So these are small living beings, okay, and which can be seen with the help of microscope. Have you ever seen a microscope? Yes. So we can see this microbes and microorganisms with the help of microscope. Because why we use microscope? Because these bacteria, these microorganisms are very small and we cannot see with our naked eye. So that's why it is compulsory for us to use what? To use microscope. So, and these microorganisms are found everywhere, like air, pani maybe, soil maybe, food maybe, and inside and outside the body of the animals also. Okay, so microbes, these are like how we live. Microbes also live like that only. So they do all the essential functions of life, like they grow, they also even reproduce, and they divide into multiply rapidly in a large number. Within a short time एक microbe से 1000 microbes हो सकते हैं. So they divide, they multiply in such a way in a rapid form that from one microorganism, if they get essential food, then they multiply and they grow in a large number within a small time. So harmful or disease causing microbes are called as what? Germs. So the microbes which causes diseases, that are called as what? Germs. And these germs are of four kinds. First one is what? Bacteria, viruses, protozoa, and fourth one is fungi. So what are bacteria? Bacteria are single celled plant. It is like a plant, single celled plant, and which looks like a round or like a rod like thing or a spiral shape. Okay, you can see the picture over here. These are, it can be round like a rod and it can be like a spiral shape, and this causes diseases like typhoid, cholera, tuberculosis, etc. Next is what? Virus. So virus are much smaller than bacteria and it can seen only with the help of what? Electron microscope. So you can see virus with the help of electron microscope, and it causes diseases like influenza, rabies, measles, smallpox, etc. Next is what? Protozoa. Protozoa are little bit bigger than bacteria and these are single celled animals. So it causes diseases like malaria and dysentery, and you get this disease with the help of protozoa, amoeba, and plasmodium respectively. So two diseases like amoeba, dysentery, and malaria we get with the help of, because of protozoa. नेक्स्ट इज व्हाट? फंगी. सो फंगी और इज अ फंगस, लाइक कहीं भी खाने के ऊपर फंगस आ जाता है, राइट, उससे फंगी होती है. एंड दिस फंगी आर स्मॉल नॉन ग्रीन प्लांट and these are larger than bacteria and this causes what? This causes ringworm, which is dangerous also. Next is what? Communicable diseases. Have you ever heard this word, communicable diseases? So communicable disease means, in a short form, in an easy way I am telling you, okay, which transfer from one person to another person. That type of diseases are called as what? Communicable diseases. अब हमें तो पता नहीं है कि सामने वाले इंसान से जिससे हम बात कर रहे हैं उन्हें डिजीज है या नहीं है. We don't know, right? So, but we come in the contact with that person, we speak with them, we talk with them, we even share many things with them. So, because of that, if that person is having disease, अगर उस person को कोई ऐसी disease है, तो easily वो person की disease हमें भी transfer हो सकती है. The main example of today's is coronavirus. Okay, so coronavirus disease, it can spread from one person to another person. That's the reason we are wearing what? Mask. Okay, so this type of diseases which transfer from one person to another person are called as what? Communicable diseases. Okay children, yeah. So germs are parasites and if they enter in the animal body, they live, they grow because they get all type of food from animal body. And white blood cells which are present in our body, it fights with these germs. So if our white blood cells are much stronger, then we are not affected with the germs. But if they are weak
and the germs are much healthier, so we get diseases. So germs can enter through our nose, mouth, if any broken is there, if any cuts are there in the skin, so the germs can enter. Okay, and it grows and affect our body, which is called as what? Infection, that our body is been infected by the germ. Immunity, if it is good, it fights with the germ. So diseases which are caused by germs and easily passed on, okay, from a sick person to a healthy person, is called as what? Infectious or communicable diseases. Okay, as I told you. So from a sick person, if the disease is transmitted to a healthy person, then it is called as what? Communicable disease. How does communicable diseases spread? By air. Now suppose, for example, I am standing here, I know I am affected, so I am coughing, I am sneezing. So whatever the germs and bacteria present in my body while sneezing and coughing, it enters into the air. Okay, and if any person, healthy person, is standing beside me, तो वही air से, हवा से वो germs जो है उनके person, healthy person की body में चले जाते हैं. And if it is weak enough, he get affected. If he is strong enough, might be the germs cannot affect. So what I should do while sneezing, while coughing? I should keep my handkerchief so that the germs could not enter to other body and could not enter into the air. Next is what? Direct contact. I am having some disease, okay, and like what are the diseases which can cause by air? Cough, cold, flu, smallpox, measles. These can spread through air. Next is what? Direct contact. मुझे कोई disease है जैसे कि influenza, smallpox, measles, ringworm, cough, common cold, okay. तो अब मैं, मेरे पास कोई healthy person है और वो या तो मेरे साथ कोई क्लोथ शेयर कर रहा है या मेरे साथ कोई मेरी चीज़ों को शेयर कर रहा है, तो ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से माई डिजीज कैन बी ट्रांसफर टू दैट पर्सन. नेक्स्ट इज व्हाट? फूड एंड वाटर. सो मैनी जर्म्स, सबसे पहला जर्म्स जो है ना फूड और वाटर को अटैक करते हैं, और वही फूड एंड वाटर जब हम खाते हैं पीते हैं तो ईजिली हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं वो जर्म्स. सो because of that you get diseases like typhoid, cholera, diarrhea, dysentery, jaundice and food poisoning. So milk from the infected cow also, it can also affect you. Next is what? Through cuts in the skin. So if you are having any injury or any cuts in the skin, you get diseases like tetanus spread in this way. So if अगर कोई cuts है आपकी skin में, cover that with help of bandage or some cloth or some like cotton cloth. Next is what? Insects. Yes, insects play a major role from transferring disease from one person to another person. Example, हम मस्कीटो ले लेते हैं, तो मस्कीटो आता है हमारे ब्लड को सक करता है, ओके, और यही मस्कीटो जाके किसी और के ब्लड को सक करता है. फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरा ब्लड सक किया और मुझे कोई बीमारी है, एंड वही अपनी बॉडी से, वही अपने शक्कर से वो दूसरे के ब्लड में जाता है, तो जो जर्म्स मेरी बॉडी के अंदर है वो जर्म्स वो इंसान की बॉडी के अंदर चले जाएंगे जब वो ब्लड सक करता है. Right, so this is how the transfer of diseases because of the insects. And what type of disease you will get? Malaria, plague and sleeping sickness. Next is what? By pets. अगर कोई disease like अगर किसी dog ने bite कर लिया आपको to a man, okay, by a bite of a rabid animal like a dog, तो क्या होता है, जो dog के अंदर के जो disease है, it इज़ वेरी डेंजरस डिजीज, ओके, एंड अगर इसको क्योर नहीं करें, डॉग की बाइट को क्योर नहीं करें, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है. सो इफ अ डॉग बाइट्स यू गेट अ डिजीज लाइक रेबिस बिकॉज द जर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द डॉग, दैट वायरस एंटर्स इनटू आवर बॉडी एंड इट अटैक्स नर्वस सिस्टम. डायरेक्ट अटैक वो किसको करता है? नर्वस सिस्टम को. दैट्स वाई इट इज़ वेरी डेंजरस एंड इट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड टू द मैन through carriers like some healthy person might be. So now I am a healthy person and the person beside me is also a healthy person. मुझे कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बॉडी में या कहीं भी मुझे जर्म्स है which I don't know. So I am healthy person, I know I am healthy, I can go for a walk, I can do many work. So I come in the contact with other person. So मेरे वो हैंड शेक करने से या मेरा कोई टॉवल लेने से या मेरा कोई रुमाल लेने से, if I share food also, my germs will be transferred to another person. So if जो मेरे बाजू का पर्सन है अगर वो थोड़ा वीक है तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, पर उस जर्म से वो अटैक हो जाएगा, उसको अटैक होगा. So this is how the germs transfer through the
carriers. It like works like a messages. How the message transfer from WhatsApp to another WhatsApp. So this works also like that. From my germs, it has been transferred to other one. Through soil. So when a person walks barefoot, नंगे पैर, on the soil, तो soil में हमें तो सिर्फ दिखता है कि वो मिट्टी है, बट उसके अंदर hookworms होते हैं. Okay, small hookworms होते हैं, and this enter into the skin through blood. Okay, and carried by the blood. तो वो जो hookworms है पहले आपकी skin के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद वो blood के through आपके कहीं भी body में जाके attack कर देते हैं. So next is what? Prevention of communicable diseases. How to prevent your communicable diseases? There are 3 methods. By stopping breeding of germs and insects, by preventing the spread of germs from the sick, and by increasing resistance against germs. So by stopping, how to stop? हमारा जो drinking water है, it should be filtered, it should be boiled, and it should be stored in good place. Milk को boil करना चाहिए. Third one, उनको कवर अच्छे से करना चाहिए वाटर एंड मिल्क को, फूड को. फोर्थ वन, इफ द जर्म्स डाई व्हेन एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू द फ्रेश एयर एंड सनलाइट. तो हमारे घर में इतने सारे वेंटिलेटर्स होने चाहिए दैट वी शुड गेट अ फ्रेश एयर एंड वी शुड गेट सनलाइट, एंड दिस आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द जर्म. डस्टबिन है, उसको कवर करो ताकि कोई इंसेक्ट उसके ऊपर बैठे ना. विंडोज पे वायर्स की स्क्रीन लगा दो so that the dust and the germs will be kept outside. Toilets and bathrooms should be cleaned every day with phenyl and Dettol, and water should not be allowed to be collect at one place, stagnant water, because if the water महीनों भर अगर वहीं पर ही पानी होता है तो वहाँ पे germs होते हैं. Okay, so how preventing the spread of germs from the sick person? Suppose मुझे germs है, okay, तो मेरे से किसी और को germs ना हो, तो मेरे से दूसरों को कैसे बचाना चाहिए? फर्स्ट, मुझे सेपरेट रूम में रखना चाहिए. सेकेंड थिंग, मेरे जो प्लेट्स है या कुछ भी ग्लास है उसको अलग से धोना चाहिए और उसको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए. सो चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज शुड नॉट बी सेंट टू स्कूल. एंड नेक्स्ट वन, मस्कीटो नेट, मस्कीटो रेपेलेंट, ओडोमॉस, गुड नाइट्स, दिस शुड बी यूज्ड. सेकेंड वन, बाय इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस अगेंस्ट जर्म्स. गुड इम्यूनिटी. कोरोना वायरस के लिए सबसे ज़्यादा क्या कहा? इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए. So if you have a good immunity, then you will not get affected with the diseases. So for this well immunity, there were vaccination, a small dose of particular disease causing germ vaccine. वो उसका इंजेक्शन मिलता है, बचपन से उसके इंजेक्शंस लगते हैं to a healthy person. So it becomes like वो एक आर्मी की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी जर्म से. You can see the picture over here. See this one. तो पहला जब बचपन से ही वो जर्म से बचाने के लिए इंजेक्शंस लगते हैं. ऐसा नहीं कि बीमार होने के बाद, बीमार होने से पहले ही इसके इंजेक्शंस रहते हैं. सो अगर गुड इंजेक्शन लग गए, आपकी इम्यूनिटी गुड होती है, एंड देन यू विल नॉट गेट डिजीजेस. सो 6 week, 9th month, 9 to 12 months, 16 months, 2 years, 5 to 6 years, till 10 years, you have these injections which you ask your parents. You are in 5th class now, yes, you ask your parents, I hope you got all these injections. Okay, yes. Next is what? ORS, oral rehydrating solution. What does it mean? So suppose for example किसी भी बच्चे को या किसी को अनलिमिटेड वॉमिटिंग्स होते हैं, डायरिया होते हैं, तो क्या होता है? डायरिया वॉमिटिंग्स होने से उनकी बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड है वो सारा बाहर निकल जाता है. सो इट इज़ वेरी डेंजरस, और अगर वो पर्सन की क्योर नहीं हुआ, सो द पर्सन कैन डाई ऑल्सो. ओके, सो ORS इज दैट कि अगर किसी पर्सन को उल्टियाँ होते हैं तो वो कुछ हार्ड चीज़ तो नहीं खा सकता, बट जब उन्हें उल्टियाँ हो तब आप उन्हें ORS दो. इससे क्या होता है? जो उनका लॉस हुआ, मिनरल लॉस और वाटर लॉस हुआ, ORS से बैलेंस हो जाता है. ओके, सो rehydration solution is given to save the child. It is prepared. It is given to save the child because उल्टियाँ डायरिया स्टॉप नहीं होते, बट अगर आप वो ORS बना के देंगे तो चाइल्ड सेफ रहता. तो कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट यू टेक अ फिल्टर्ड वाटर, बॉयल इट एंड देन कूल इट. उसके अंदर 1 स्पून सॉल्ट डालो, 8 हीप स्पून शुगर डालो, एंड 1 लेवल टीस्पून बेकिंग सोडा डालो. ओके, एंड यू कैन ड्रॉप व्हाट? लेमन जूस ऑल्सो फॉर द टेस्ट. दिस इज व्हाट ORS. और ये ORS 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, 12 घंटे के अंदर ही आपको पी लेना चाहिए. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ.
अगर आपको बार बार कंटिन्यूसली आपको उल्टियाँ हैं तो आपको ORS पीना चाहिए, बिकॉज वॉट एवर द लिक्विड लॉस इज देयर इन आवर बॉडी, it can be cured. Okay children, so yes, with this we have completed our lesson, and your work is to read the lesson and then watch my video, and my work is that I will send you the objective question answers new word part as soon as possible. Okay, so we'll meet soon with our new lesson next time. Till then children, goodbye and take care.